South Indians have been successful in birth control, which means that now birth control is low, but then the aging population is rising. And so, can we give them incentives to increase the birth and, just to produce more babies, and then so that they don't have the aging population and they also have working age population in later years? So, can we do that? And what is South Indian, states are doing in that respect? So, this is all we are going to read today. Hi everyone, welcome back to EQUIPOISE Classes. I am Surbhi Gupta, and in these videos we pick up one of the economics topic, or in general one of the topics that we feel can be relatable to economics and economy altogether. That is the topic that we pick from the newspaper, and we read it directly from the newspaper. And if anybody of you has the question that I am just reading it from the newspaper, so I think first of all, kudos, because I think I am in a way helping you, because people don't read newspapers these days, and at least I am reading it with you so that you get the satisfaction that you have completed one of the articles from the newspaper directly with me. But that's not the thing, that's not the only thing that I'm doing. What my purpose is, first of all, uh, uh, just back in the time, I used to get the articles from the newspaper and then pick up the important points and make a presentation altogether. But that, misses the essence of the author, misses the emotions of the author, which are there in the article itself. So I want to bring it up, to you directly. And also, the next point, why we are reading newspaper directly the article from the newspaper, is that if you're preparing for any entrance exam, you are struggling to figure out that how to read a newspaper and how to pick the important topics, which are the important topics and which are not, and what to leave and what to study. So all these questions and queries get answered in these videos. So all right, I'll quickly share the screen because I think I've already talked a lot. And guys, if you haven't subscribed to the channel, do consider subscribing. I think I bring a video daily, on a daily basis, and you get something or the other on my channel. There's a lot of activity, and if you want to know what activity is happening on this channel, I believe you will have to subscribe. And subscribe button is looking like me today. So basically, I am looking like a YouTube button and a subscribe button, but you don't have to keep my subscribe button of this color. Okay, just hit that subscribe button if it is red at all, if you haven't subscribed. So I think that's a good promotion in this red one. Okay, jokes apart, this is today's article, the population question. Okay, so we are talking of the population, we are talking of the demographic dividend today. Okay, so basically, why have the concerns been raised over aging population in South India? Can people be incentivized to have more babies to impact this trend? What role can internal migration play? Because there is migration. So what role can it play? And guys, by the way, today's article is from the Indian Express. And if you want, I'll share this newspaper. You will have to let me know on the Telegram group. Where will you find the Telegram group? The first link in the description is of the Telegram group. You click on the Telegram group and you will directly be directed to the group. Okay, so let's start reading. I'll put up my pen. Okay, Andhra Pradesh CM N. Chandraprabhu Naidu has said his government is working on a law to incentivize residents of the state to have more children. Earlier, we had to see our population is still huge, but we are thinking from the state's perspective and not the country's perspective as a whole, because it's still debatable to me that why are we considering to we need to incentivize people to produce less babies, okay, less of the population. But now here in this state, they are planning to incentivize to produce more children. We are already in deficit. Having less than two children leads to rapid decline of the young population. So they are thinking as per the demographic dividend in the future years, especially during the time when India will achieve that Viksit Bharat thing, where we'll complete 100 years of our independence. And if we don't have the population, working age population who can work, then the aging population will be a huge liability on India. Okay, so earlier when asked by Indian Express about concerns among southern states that their smaller population might impact their representation in the parliament, after the deal,
delimitation of constituencies, Naidu had said South India with the lower fertility rate is already facing aging issue, and it will gradually impact North India as well. Okay, so guys, the thing is, I'm not talking from the perspective of the constitution or the representation in the parliament, but I believe that South Indian states are doing much better as compared to the North Indian states or the northern states, and the literacy rate is really good, and the life expectancy is good, the quality of life is good, and the education quality is really amazing there, and the fertility rate is lower, the mortality rate is lower. So on every parameter, they are doing wonderfully good. But if we don't have people there who can work towards this progress, then their progress will be stopped or limited, and then this will hamper northern growth as well. So we need to consider this aspect, I believe, and this is the logic from where this article is coming from. Okay, so let's keep reading it. Why aim for, okay, let's focus here. What do the data say on aging and overall population size? With census 21 delayed, most recent population projections available are in 2020 report of technical group within the Union Ministry of Health and Family Welfare. As the chart shows, India's population is projected to age with each passing year. The proportion percentage of people in 60 plus age bracket will rise across the board. Even though the increase in northern states will be smaller than in south, this will because most southern states transitioned to a lower fertility rate sooner than northern states. For example, Uttar Pradesh is projected to achieve replacement level of fertility only next year, that is more than 2 decades after Andhra Pradesh. So here's what else the report projected. In 25 years from 2011 to 2036, India's population will increase by 31.1 crore. Almost half, 17 crore, will be added in 5 states. So 17 crore will be added by 5 states. Which are those 5 states? UP, Bihar, Maharashtra, West Bengal, and Madhya Pradesh. As much as 19% of the total population increase during this particular 25 years phase is expected to occur only in Uttar Pradesh. So Uttar Pradesh is increasing their population like anything, and the 5 states are contributing majorly to the increase in population. So the contribution of the 5 southern states, Andhra Pradesh, then Karnataka, Kerala, Telangana, and Tamil Nadu, to the total increase in population during these 25 years is expected to be only 2.9 crore or 9%. It's really less if we compare it with the northern states' contribution. In total, the 5 states are not contributing enough in the population, which means that it is in a way good. It's in a way good thing that we are right now seeing as a negative, but I believe it's a very good thing. But then, if we talk of state-wise growth, then it may be negative as per the states, because there's a competition of north and south. So if northern population is huge and they're dominating, soon they'll start migrating because population in the southern state is less, and then eventually they lose their culture, they lose their essence, and the people there are more educated, so we need more educated people like that. Okay, so with declining fertility and increasing life expectancy, the number of older persons in the population are expected to, is expected more than double from 10 crore to 23 crore in 2036. So, see, you will agree ki, with better technology, better facilities, better healthcare, and cheaper healthcare as compared to the other nations, life expectancy in India has increased. People tend to live longer than they used to live earlier. So even the older population is not going anywhere, but they're not working either. So they are in a way burdened, but they are living there on the earth. I mean, it's not that I'm saying older people should die. That's not the scene. That's not at all. We're merely talking from the perspective of economics here. Okay. Then, all right, their share in the population rising from 8.4% to 14.9% during this year. So in Kerala, where lower fertility and mortality rates are achieved much sooner than other states, the proportion of persons aged 60 years and older will increase from 13% to 23%. Almost 1 in 4 individuals would be older. Then the population of Uttar Pradesh, by contrast, is expected to be comparatively younger. So UP में young लोग हैं, Kerala में बुड्ढे लोग हैं, old people. Okay, so that is the clash that southern northern states are facing. Then why is an aging population
and a relatively smaller population a concern. ये concern क्यों है? Population age हो रही है, aged लोग ज्यादा है अगर, या smaller population है, ये इतना बड़ा concern क्यों हो गया southern states के लिए? ठीक है, स्पेशली उन 5 states के लिए जो बात कर रहे हैं कि इतना कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे 2036 तक पॉपुलेशन ग्रोथ में, जितना बाकी नॉर्दर्न स्टेट्स कर रही हैं. So an aging population, which Naidu spoke of, and a smaller population are two separate concerns. So these are two separate concerns. एक है aging population, एक है smaller population. Typically, if 2/3 of the population is working age bracket, it implies a dividend. अगर 2/3 of the population आपका, अगर हम टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करें 3 से, एंड 2/3 हिस्सा अगर वर्किंग एज में है, तो ये डिविडेंड है. डिविडेंड मतलब बेनिफिट है, काम कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है. सो ये हमारे लिए बेनिफिट है. वेयर एज सॉरी, बिकॉज द डिपेंडेंसी रेशियो, दैट इज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज नॉट अर्निंग एंड इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, इज लेस देन 50%. ठीक है, कौन सी ऐसी पॉपुलेशन 15 से लेके 69 ईयर्स के ब्रैकेट के बाहर जो है, जैसे 15 साल तक के बच्चे हो गए और इसके ऊपर 69 70 प्लस लोग हो गए. सो ये सारे लोग इन अ वे बर्डन है. बर्डन भी मतलब एक लिटरल साउंड में मत लो, इट्स जस्ट डिपेंडेंट पॉपुलेशन. Okay, dependent on others. So dependency is of two kinds: those below the age of 15 and those above the age of 60. Oh sorry, 60, sorry, 15 to 59 था वो ब्रैकेट. मैं थोड़ा एडवांस कंट्रीज में पहुंच गई थी. ठीक है. सो जितने भी 15 साल से पहले के बच्चे हैं वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, और 59 यानी 60 इयर्स से ऊपर के लोग हैं वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है. ठीक है. A high percentage of aging population does imply that the state may have to spend more on taking care of the growing population. So you would agree कि 15 years से पहले वाले जो बच्चे हैं उनको हेल्थ केयर डिपेंडेंसी इतना नहीं रिक्वायर्ड होता जितना 60 से ऊपर वाले लोगों को होता है. स्पेशली जितना आप एज करते जाते हो, मे बी आपको अटेंडेंट चाहिए, मे बी आपकी मेडिसिन पे खर्चा बहुत ज्यादा है, मे बी आपकी ट्रीटमेंट्स पे खर्चा बहुत ज्यादा है. सो स्टेट्स को भी केयर करनी पड़ती है, बिकॉज अगर आप गवर्नमेंट से रिटायर हुए हैं किसी भी डिपार्टमेंट से, तो गवर्नमेंट आपका बहुत सारा खर्चा उठाती है हेल्थ केयर का. ठीक है, आपको बहुत सस्ते में पड़ता है हेल्थ केयर. आपके कार्ड्स होते हैं वो गवर्नमेंट के, जिससे आपका हर चीज सस्ते में पड़ता है. बट ये खर्चा उठाता कौन है? कोई तो उठाता है. अगर लोगों को नहीं देना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज दे आर एंजॉइंग देयर पेंशन एंड गुड हेल्थ केयर बेनिफिट्स बिकॉज दे वर इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, but then government is bearing that burden. So government is taking care of you, which means government is putting up more and more money. And if the aging population is more, government will need more money to take care of the aging population. As simple as that. Okay. So the issue of the total population of the state being lower compared to the other states is different. This issue has come to sharp focus in public discussions on electoral. So ये specifically ना अभी लोकसभा और अपनी सीटों पे अटके हुए हैं इस आर्टिकल में. लेकिन एक सच बात ये भी है कि जिन स्टेट्स के, अब हम यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश की बात करें, इनमें यंग पॉपुलेशन है, वो यंग पॉपुलेशन कमा रही है और सरकार को कम खर्चा करना पड़ रहा है एजिंग पॉपुलेशन पे, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन कम है वहां पे, तो वो बाकी चीजों पे खर्चा कर सकते हैं. जबकि जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन एज कर गई है और वर्किंग एज में कम लोग हैं, तो वो पहले तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे उतना जीडीपी में, और जो थोड़ा है वो उनको एजिंग पॉपुलेशन के लिए लगाना पड़ रहा है. तो वो स्टेट्स ग्रोथ के बारे में कैसे सोचेंगी, नई पॉलिसीज कैसे लाएंगी, नई स्कीम्स पे खर्चा कैसे लाएंगी? सो ये इशू है उन स्टेट्स को जो बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में पीछे रह जाएंगी. ठीक है. So this is yeah, I think बीमारू states तो ये आपकी होती है नदन states. तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात हो रही है यहाँ पे. So what do government policies? So do government policies to boost fertility, as Naidu mentioned, work? So क्या ये गवर्नमेंट पॉलिसीज वर्क करती है बोलने के लिए कि फर्टिलिटी बूस्ट करो? अब गवर्नमेंट पॉलिसी से थोड़ी खाली फर्टिलिटी बूस्ट हो जाएगी. आज की डेट में तो और भी बहुत इश्यूज हैं. बट लेट्स रीड. Naidu referred to some countries such as Japan, China, and countries in Europe that are also struggling with aging population, but there is no real evidence that people who have reached a certain level of prosperity and education can be incentivized to have more babies. Academics such as social demographer Sonalde Desai, distinguished university professor, okay, and she said that unanimous. Okay, so let it be. I mean, this is what different people and economists are saying. But virtually nowhere in the world, Japan, China, Korea, France have pro-natal, natalist policies worked.
The only place where such policies had some impact to extent that they did not allow fertility rate to plummet to very low levels were in Scandinavian countries. So here the policies were more in the shape of family support, childcare support, gender equality, paternity leaves, etc. However, she stressed that even giving financial support doesn't do enough to encourage families to have more babies. आप ज्यादा पैसे दे दोगे इसका मतलब नहीं है वो ज्यादा बच्चे करने लगेंगे. So why do statements like the ones made by Naidu matter? फिर क्या फर्क क्या पड़ रहा है, क्या changes हैं, क्या दिक्कत है? So these statements basically demonstrate a stark turnaround on the stand taken by politicians, especially from southern states, on the population question. Roughly 5 decades ago, the main concern facing India was rapid population growth fueled by high level of fertility is what births per woman. एक lady कितने बच्चों को जन्म दे रही है. The situation was once deemed too grim that many wondered if India would even have enough food to feed its teeming millions. So, इतने इतने लोग पैदा हो रहे थे कि उस टाइम ये कंसर्न था कि खाना भी पूरा पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इतनी पॉपुलेशन है. And over the decades, however, India has been able to arrest the pace of population growth, an achievement that has led by several southern states. So population control पहली बात मैं नहीं अग्री करती कि पूरी तरह हुआ है, नॉर्थ में तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन सदर्न स्टेट्स ने कंट्रीब्यूट किया है पॉपुलेशन पेस को कंट्रोल करने में, एंड स्पेशली आंध्र प्रदेश ने अचीव किया है रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी. ठीक है, दैट इज रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी क्या होता है? एवरेज ऑफ 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन इन 2004. सो देखो, एक अगर हमें पॉपुलेशन और रिप्लेस करनी है, बेसिकली जितनी पॉपुलेशन है और रिप्लेसमेंट रेट पे आना है, तो हर लेडी को 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन होना चाहिए, बेसिकली 2 चिल्ड्रन होने चाहिए. तो केरला ने सॉरी आंध्र प्रदेश ने ये रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी अचीव कर लिया था इन द ईयर 2004, 20 साल पहले, मेकिंग इट फिफ्थ इंडियन स्टेट टू आफ्टर केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल. आंध्र तो 4 स्टेट्स ऑलरेडी रिप्लेसमेंट लेवल अचीव कर चुकी थी, यानी 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन फर्टिलिटी लेवल अचीव वो कर चुके थे. आंध्र प्रदेश यूज टू हैव लॉ दैट बार्ड पीपल फ्रॉम कंटेस्टिंग इन लोकल पोल्स इफ दे हैड मोर. ओ आंध्र प्रदेश ने क्या किया? आंध्र प्रदेश ने कहा कि आप वोट ही नहीं कर पाओगे अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं. ठीक है, तो ये पॉलिसीज कुछ ना कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए लानी पड़ी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत, अब जितनी पॉपुलेशन होगी उससे फीड भी तो करोगे आप, लेकिन अब वो ऐसी कंट्रोल हुई कि अब एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो दोनों ही दिक्कत होती है. आई फील चाइना का देखोगे, वन चाइल्ड पॉलिसी आई, अब उन्होंने हटाई क्योंकि उनकी भी एजिंग पॉपुलेशन हो गई. तो क्या होता है, एक टाइम होता है, सर्टेन टाइम पीरियड, जब आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करनी होती है, बट वो ज्यादा कंट्रोल हो जाती है तो एजिंग पॉपुलेशन आती है, सो देन यू हैव टू गिव बूस्ट टू योर पॉपुलेशन. देन आफ्टर अ सर्टेन वाइल जब दोबारा इंक्रीज होने लगेगी तो वन चाइल्ड पॉलिसी ले आओ. ये तो डिपेंड करता है आप कौन सी जनरेशन में पैदा हुए, आप कितने लकी हो कि आपको बच्चे करने दिए जा रहे हैं नहीं. बट आज की डेट में आई डोंट थिंक दीज आर द ओनली इश्यूज. सो नॉट ओनली हैविंग मनी, इनकम or a policy can give incentive to people to increase fertility rate or produce more babies, because I feel with higher education and also एक तो जो जनरेशन ने बेबीज प्रोड्यूस करने हैं वो वेल एजुकेटेड है, तो उनको पता है कि 1 पॉइंट से ज्यादा, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं संभल रहे. बट आज की डेट में एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव है हमारी कंट्री में कि a working class population is only happy with one child, and they are taking care of that one child's education to the best of their abilities, but they are working as well, so it is difficult for them to manage two, and they are willingly stopping at one. So you cannot give them incentive or fertility. And also, this is one factor. Another factor would be the fertility rate has declined because of the women health and the pollution and the other conditions, the things that we are eating, the अडल्ट्रेशन, डिफरेंट थिंग्स, एंड बिकॉज ऑफ विच आज की डेट में लोग करना भी चाहते हैं बेबीज प्रोड्यूस, तो वो नहीं हो पा रहे. ठीक है, सो देयर आर लॉट मेनी इश्यूज आई बिलीव, सो वी नीड टू एड्रेस ऑल ऑफ देम. इट्स हार्डली विल गोइंग टू स्टॉप एट ओनली कि आप इंसेंटिव दे दो लोगों को तो बच्चे प्रोड्यूस कर लेंगे. ऐसा नहीं होता कि आपने तो इंसेंटिव दे दिया, प्रोड्यूस कर लो, संभालना भी तो नहीं है, तो आप एक टाइम के पैसे दे दोगे, हर टाइम के तो नहीं दोगे ना.
Okay, so however, while individual states are witnessing considerably low levels of fertility than in the past, India's inherent population momentum has meant that it is now the most populous country on the planet. सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है हमारी पूरे प्लानट पे, ग्लोब पे देख लो, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हम लेके बैठे हैं इतने से लैंड में, वो ग्लोब देखता है हम इतने से दिखता है, उसमें भी हम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लेके बैठे हुए हैं, और अभी भी हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन बूस्ट करने की। तो मेरे लिए तो यही आयरनी है कि आई एम रीडिंग दिस आर्टिकल। बट देन अगेन ये आर्टिकल हम लोगों को ना हेल्प करते हैं समझने में कि ऑन द होल प्लैनेट लेवल, इंडिया के नेशनल लेवल पे तो हम पॉपुलेशन कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन अगर हम उसके अंदर डीपर जाके देखें और स्टेट्स का कॉन्फ्लिक्ट देखें, स्टेट्स की पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन देखें, ठीक है, एंड ओवरऑल हम सीन देखें अगर पूरा का पूरा स्टेट्स का, नॉर्थ वर्सेस साउथ का, तो वहां उनके लिए प्रॉब्लम है। वहां वो मोटिवेट करना चाहते हैं कि भाई अगर पॉपुलेशन सारी बढ़ी रही है तो हम कंट्रोल करके क्या करें, हम फिर साउथ की बढ़ाते हैं कि कम से कम सदर्न लोगों का नाम होगा कहीं पे, खाली नॉर्थ डोमिनेट नहीं करेगा। तो दे आर थिंकिंग मच लाइक फ्रॉम लॉन्गर पर्सपेक्टिव, वो इनर इंटरनल पॉलिटिक्स कहलाती है। So yeah, that's it. And this is the graph, the population percentage by different age bracket. आप देख सकते हो 2011 में इस एज ब्रैकेट में कितने लोग थे, प्रोजेक्टेड कितने हैं, एंड आंध्र प्रदेश में क्या हाल है, उत्तर प्रदेश का कंपैरिजन, बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन है, सो यहाँ पे 36 से 22 जा रहा है, एंड यहाँ पे कितना कम जा चुका है। एजिंग पॉपुलेशन देख लो कितनी है, ठीक है, एंड वर्किंग पॉपुलेशन देख लो। तो आई बिलीव दिस इज what the article was all about, and we could just understand that what is happening in the southern states and what government is thinking and how you can incentivize them, and what further actions can be taken by government through their different policy measures. So with that, I'll wrap up this session today, and I really hope it was useful in some or the other way, and if not, it was just a an eye-opening session. Even for me as well it was, because I could from the article only मैं कंफ्यूज थी कि मैं किसकी साइड लूं। मैं इतनी पॉपुलेशन है इंडिया में कि अब मैं इंडिया की पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात करूं, या मैं सदर्न स्टेट्स भी सही बोल रही हैं क्योंकि उनका एजुकेशन, उनका सब कुछ इतना अच्छे लेवल पे है कि उनकी पॉपुलेशन सारी डिक्लाइन नहीं होनी चाहिए, उनकी वर्किंग पॉपुलेशन वर्किंग एज में होनी बहुत जरूरी है। सो उनकी डिक्लाइन होगी तो ओवरऑल इंडिया पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। सो मैं उसकी साइड लूं, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करूं या पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करूं। सो अगर वो मेरे लिए इतना कंफ्यूजिंग था तो आई बिलीव कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, एंड इसी से हमें पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। अब यही मेरा मतलब था कि अगर मैं इस आर्टिकल से पॉइंट उठा लेती तो थोड़ा कंफ्यूजन होता, हम ये चीज ना समझ पाते जो हमने रीड करके साथ में समझी, एंड विच इज व्हाई आई ब्रिंग दीज आर्टिकल्स। बट इनफ विद द जस्टिफिकेशन। If you really thought that it was useful for you in some or the other way, even if it was useful to get some information to discuss in the social gatherings in the upcoming events, guys, लाइक कर दो इसलिए वीडियो को, शेयर कर दो किसी के साथ। अगर ज्यादा एफर्ट लग रहा है तो कोई नहीं, चैनल सब्सक्राइब करके चले जाओ एटलीस्ट, बिकॉज ईच वन ऑफ योर सब्सक्रिप्शन ट्रूली मीन्स अ लॉट टू मी, एंड थैंक यू so much for making Equipoise classes what it is today, and thank you for making me a community of more than 2 lakh people. Truly means a lot. I feel blessed and grateful to each and every one of you, and for so much of love. Thank you so much for pouring in so much of love, and keep pouring in more. So yeah, and keep smiling, stay happy, stay healthy, enjoy the festivals, take care. I'll see you tomorrow with another one. Till then, take care.